Hello guys, good morning to all. This is shashanka shekhar and welcome all to my channel गणपति क्लासेस। आज भिडियो रे आमे आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमिस्टर 2020 आउ 2022 बैच रे जो फर्स्ट सेमिस्टर जहाँ जहाँ क्वेश्चन होता फर्स्ट सेमिस्टर रे प्रीवियस ईयर 2020 आउ 2022 बैच ओके से ही फर्स्ट सेमिस्टर रो क्वेश्चन गुड़िक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़िक डिस्कस करवा। ऑलरेडी मु यार गोटे वीडियो कर सारी जहाँ कि 2021 आउ 2023 बैच रा 2021 एवं 2023 2021 आउ 23 यही बैच रो फर्स्ट सेमिस्टर रो सब क्वेश्चंस गुड़िक डिस्कस कर सारी। आमे तार पूर्व वर्ष 2020 एवं 2022 यही बैच रो फर्स्ट सेमिस्टर रो क्वेश्चन आंसर गुड़िक डिस्कस करबा। प्रीवियस ईयर क्यों क्यों क्वेश्चंस माने आस्ते ओके। तो प्रीवियस ईयर गुड़िक क्वेश्चंस माने भल भाव टे स्टडी करदेव पिला माने देखिबो किपरि भाव रे क्वेश्चंस गुड़िक रिपीटेशन होछि सही क्वेश्चंस माने ही एका आसुछि सही क्वेश्चंस माने रिपीटेशन होछि। जमती कही टोटल 5 यूनिट रोची तो मो जो कंपलसरी पेपर रोची 3टा सब्जेक्ट फर्स्ट सेमिस्टर रे 80 मार्क्स रो ओके। तो से तो 5टा जो यूनिट अच्छी प्रतिटा यूनिट रू 4टा क्वेश्चंस आसीबो 4टा क्वेश्चन 5 मार्क रो 4टा क्वेश्चंस आसीबो दुईटी गोटे क्वेश्चन रे दुईटी आ गोटे क्वेश्चन रे दुईटी और थिबो ओके बुझी पाजो ना। जमती एठारे भी आमे डिस्कस करबा किपरि भाव रे रहूची मु ऑलरेडी मु ता भी कहि सारी छी से प्रीवियस वीडियो रे ओके। तुम निश्चित भाव देखी देइथबो जो देखि ना निश्चित भाव से गुड़िक देखी दो जो देखिबो तुम चेक करिवो निजे चेक करिवो किपरि भाव रे क्वेश्चंस गुड़िकर रिपीट होची एवं से परि भाव रे तुम प्रिपेयर हबो एवं एग्जाम दे जीवाको एग्जाम दे जीव ओके। तो आज ही आमे 2020 रो एवं 2022 बैच रे पढ़िथबा फर्स्ट सेमिस्टर रो क्वेश्चंस गुड़िको डिस्कस करबा। प्रथम पेपर रही देखो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन ओके। तुम जानछ यार पैटर्न कौन रोची सिलेबस किपरि भाव रोची यार पैटर्न मैक्सिमम 80 मार्क्स 3 आवर्स तुमको टाइम दिया जिवो 5 मार्क रो 10 टी क्वेश्चंस पड़ो टोटल 50 मार्क्स सेक्शन ए रे एवं 15 मार्क्स रो 2टी क्वेश्चंस करबा को पड़िबो 30 ले 50 आउ 30 हे गला 50 आउ 30 हे गला केते 80 मार्क्स ओके। देखो कौन कौन क्वेश्चन रोची। प्रथम क्वेश्चन रहिला तो व्हाट आर द एम ऑफ एजुकेशन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी देन रहिला डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ एजुकेशन ओके एंड राइट द रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। पिला माने वीडियो को निश्चित भाव तुम लाइक करिवो सांग मान सहित शेयर करिवो बहुत इंफॉर्मेटिव जिनस गोटे सब क्वेश्चंस गुड़िक नहीं कि आछि केवल सोशल साइंस एथिरे नाही सोशल साइंस रो मो क्वेश्चंस पाइले नहीं या मो नेट सोर्स रू ही का काढी सोर्स ला नेट इंटरनेट थ्रू रू मु काढी ओके। तो से मो सोशल साइंस रो पाइली नहीं जहाँ भी अच्छी से गोटे को छाड़ी देकी बाकी सब क्वेश्चंस माने अच्छी ओके। देख आउ कौन कौन रहिला एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर एज पर नेचुरलिज्म देन रहिला डिस्कस द यूज ऑफ योगा राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरविंद घोष इन एजुकेशन देन रहिला डिस्कस द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसफी डिस्कस द टाइप ऑफ नॉलेज इन सांख्य फिलोसफी व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन मॉडर्न एजुकेशन। से 7 नंबर और 8 नंबर कौन कौन रहिला देखो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू व्हाट इज वैल्यू क्राइसिस explain its relevance to education discuss the role of teacher in inclusion of value among student then explain the importance of value of harmonious life। से पर 9 नंबर क्वेश्चन रहिला write about competencies required for teacher explain the role of teacher in future society then 10 नंबर रहिला discuss about professional ethics of teacher what is the role of a teacher in nation building। एटा तो थिला 5 मार्क रो 10 टी क्वेश्चन तापर रहबो 15 मार्क्स रो 2टी क्वेश्चन कहबा को पड़िबो टोटल 30 मार्क रो एटा लॉन्ग क्वेश्चन 2टी 15 मार्क्स रो जहाँ कि तुमको मिनिमम 4 पेज कौन
4 पेज लिखिबाको पूरा मिनिमम 4 पेज तारो अधिका तुमको निश्चित भाव में लिखा पड़ो मिनिमम 4 पेज लिखा पड़ो ओके कौन कौन रहा क्वेश्चन में देख एक्सप्लेन द एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ जैन फिलोसफी डिस्कस द वैदिक एजुकेशन इन डिटेल एक्सप्लेन वेरियस अप्रोचेस टू इनकुलेट वैल्यू एमंग स्टूडेंट्स एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन यह था फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन तापर सेकेंड पेपर रही देखो चाइल्ड डेवलपमेंट उपरे चाइल्ड डेवलपमेंट ओके तो यार भी पैटर्न सेमती 80 मार्क्स 3 आवर्स 5 मार्क्स 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स 2 क्वेश्चन कौन कौन रही देख एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट राइट अबाउट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट Then write the Kohlberg state of moral development, explain the stage of social development, describe various types of children's play and its importance, and explain the aspects of Erikson theory of psychosocial development. सेबरी 5 नंबर और 6 नंबर कौन कौन अच्छी देखो व्हाट आर द डेवलपमेंट टास्क ऑफ चाइल्डहुड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोशल मैच्योर्ड पर्सन डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड ब्रीफली एक्सप्लेन stages of social development. Then what are the need in adolescence? Write about the characteristics of a leader. Write the way of develop learning quality among adolescents. Explain the adjustment mechanism with example. Say for 9 out 10 number write the concept of individual difference. How individual difference take place based on personality development. How does fostering creativity among children explain the educational implication of multiple intelligence theory. तर पार्ट बी रे रहिला explain dimension of growth and development, write the stages of social development, explain the Goldstein theory of emotional development and its educational implication, how does culture influence on child's development. Okay, पेपर 2 गला देन रहिला पेपर 3 पेपर 3 आईसीटी पेपर 3 रे कोन आईसीटी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग आईसीटी रो फुल फॉर्म होला इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो एथरे थिबा क्वेश्चंस गुडी को देखाओ डिफाइन द टर्म एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड राइट एडवांटेजेस एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन द कांसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हाउ इज द मीडिया हेल्प्स इन टीचिंग एंड लर्निंग what are the ways to improve communication skill discuss the changing role of learners with ICT what do you mean by programmed learning write its characteristics explain about knowledge acquisition process framework describe the role of internet in education and what are the different types of software used for web page creation next explain the role of print media in classroom teaching with example. Write a short note on digital space. What do you mean by collaborative learning? What are the different types of multimedia educational software? Explain the role of teacher in project-based learning. How will the classroom experience are enriched by information communication technology ICT? Write the benefit of open educational resources. Write the critical issues on internet uses. Write a short notes on smartboard. Explain the approaches to e-learning. Then part B देखो explain the role of multimedia in classroom interaction. What are the barrier in communication? Explain the method of overcoming barrier in communication. Explain the application of computer in education. Describe the characteristics of Windows operating system. तो एटे तो गला 3टा पेपर तुम कौन कंपलसरी 3टा पेपर गला तापर तुम पेडागोजी पेपर रहबो जहार साइंस तो जेमती कहि तार पीसीएम थिले मैथमेटिक्स आउ फिजिकल साइंस रहबो आउ सीबीजेड थिले तार केमिस्ट्री सॉरी फिजिकल साइंस आउ बायोलॉजिकल साइंस रहबो ओके जहार आर्ट्स थबो तार इंग्लिश आउ सोशल साइंस रहबो ओके तो देखो पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एटा रहबो तुमर टोटल 40 मार्क्स 5 मार्क रो 5टी रहबो आउ एवं 15 मार्क्स रो गोटे रहबो जेमती रही प्रथम क्वेश्चन एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स विथ एग्जांपल देन राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्कूल लेवल
State the recommendation of NEP 1986 to secondary level mathematics. 3 number है what are the rules to be observed in heuristics method. How do you teach geometry to your student? What is the importance of planning for teaching? Explain the component problem questions of micro teaching skill. Write a short notes on physical hurdles in utilizing resource and suggest measures to overcome. How do you know? How do you make use of audio visual instructional aid in teaching of mathematics? Give example. Then long question है discuss the contribution of Aryabhatta and Srinivas Ramanujan to the field of mathematics. Which is the best method of teaching mathematics according to the judgment? Justify with your argument. তারপরে এটা কলা কোন না পেডাগোজি অফ ম্যাথমেটিক্স। নেক্সট পিলাମାନେ ଦେଖ পেডাগোজি অফ ফিজিক্যাল সায়েন্স। পেডাগোজি অফ ফিজিক্যাল সায়েন্স এইଥିରେ ମଧ୍ୟ 5ଟା 55 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଟୋଟାଲ୍ 25 and 50 ମାର୍କର ଗୋଟିଏ 15 ମାର୍କସ୍, ଟୋଟାଲ୍ 40 ମାର୍କସ୍। Explain the scope and importance of science. Describe correlation of physical science with mathematics and biological science. Explain milestone in the development of science. Believe. Write the contribution of Einstein to develop science. Explain the aim and objective of teaching physical science. Discuss about the difference between behavioral and instructional objective of teaching physical science. How to use lecture cum demonstration method in science teaching. Then explain heuristic method explain heuristics method with example. Okay, then fifth number question, write the importance of planning for teaching and what is your plan. Write the performance of your plan. Then part B explain the value of learning physical science, how to develop value in your children, and what is micro teaching. Explain skill and practice of micro teaching. ସେହିପରି ଦେନ୍ ରହିଲା pedagogy of biological science. Pedagogy of biological science ଦେଖ define science and write about scope of science. Science is a way of thinking. Explain. Realization of aim of teaching biological science is not possible in our school. Discuss. What are the objectives of teaching science at elementary level? Correlate biological science with any two other subjects. Discuss about value of teaching biological science. What are the steps involved in scientific method? How do you differentiate heuristic method with that of project method? Enumerate the benefits of writing lesson plan. What is meant by unit plan and write about its importance. Write about Bloom's taxonomy of educational objectives. Compare the merits and demerits of teacher-centered and pupil-centered method of teaching biological science. Next पिलाମାନେ ଦେଖ और है pedagogy of English paper. Pedagogy of English paper first semester. What are the recommendation of NPE 1986 and POA 1992 with reference to language education in India? Briefly discuss the status of English in the Indian context. Distinguish among method, approach and technique. What are the principles of Dr. West's method? State its merits. Discuss briefly the soft skill of speaking. Explain the techniques and materials to teach speaking. What are the various activities to develop student writing skill? Write a short note or reading reflecting on text. Then what are the various components of included in teaching approach? Explain different online resources available for ELT. Then 15 mark रहला Euclid different approaches in English language teaching. Discuss in detail the mechanism of writing. Suggest 5 activities to develop writing skills. So guys, this is all about 2020 और 2022 यही बैच रे पढ़िथिबा फर्स्ट सेमिस्टर रो क्वेश्चंस गुड़िक एक्सेप्ट सोशल साइंस
बाकी सब मु कर देछि काहे ना सोशल साइंस रे मु पाई न पाइली नहीं से या गुडी को स्किप कर देछि ओके। तो पिला माने लास्ट तक जो देखिछ ए वीडियो को लाइक कर देबो सांग मान को सहित शेयर कर देबो एवं चैनल को यदि प्रथम थर पई आसीछ तो सब्सक्राइब करबा पई भूलबे ना ओके। तो आज पई हमें एतकी रहिबा पुनश्च नेक्स्ट क्लास रे हमें यार पूर्व वर्ष जेमती 2019 2021 यार मो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आसबि निश्चित रूप से मो वीडियो को लाइक करेंगे सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखर जो बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु जमती यार नोटिफिकेशन मुझे जिते यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस माने छाड़ी नोटिफिकेशन आपन को शीघ्र मिल जाव ओके। तो आपण को लास्ट पर्यंत देखा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड थैंक्स ए लॉट।